expansion and one is compression. Okay. So the value of A, if the value of A is less than 1, what will happen? And if the value of A is greater than 1, what will happen? We'll study that. Okay. So if the value of A is greater than 1, then you will get some kind of operation. Okay. Whether it is expansion or compression, we'll study that. We'll take an example for that also. And then we'll study other cases. So now, okay. So now the next part. So one example I'll take. This is a triangular pulse. Okay. The triangular pulse is defined from -1 to +1. Okay, -1 to +1. So x of at is that signal. Next new signal, the scaled version of the signal. So if A is greater than 1, suppose the value of A is 2 and value of A is 1/2. What will happen to this? So you check whether you all agree with this, because multiplication by a value which is greater than 1 is giving me compression. Multiplication by a value which is greater than 1 is giving me a compression, whereas multiplication by a value which is less than 1 is giving me expansion. How is this possible? Can anyone explain me this thing? Sir, I guess when we multiply by number greater than 1, the time domain is stretching. So basically, when graph stretches, it kind of compresses, and while you multiply it by value less than 1, it kind of gets more like a peak. So it's kind of expansion. Yeah, but can you prove this? Yeah, you're on track. So Sir? technically, all I know is yes. Sorry, who is this? Who is this? किसने आंसर किया अभी? Please anybody say. आंसर किसने किया? अभी. You're on track. No, sir, I was there. Rohit, na? Yes, sir. Shruti, you want to say something? Uttar also then. Good. Yes, sir. If 2t is equal to, if you take 1 as a t, then 2t is equal to 1, that is t is equal to 1/2. That means whatever signal is there on t is equal to 1, that will be there in the t is equal to 1/2 if we take x of 2t. Okay. Uttar? Sir, I have one doubt. Sir, Yeah. in signal A, B, and C, the amplitude remains the same or it is different? Last lecture I said, Yeah. whenever the operation is on time, there will be change on x-axis. Yeah, right. No, that's true. Okay. So now the factor is inside the bracket. That means the operation is on time. Outside Okay. bracket क्या आता है? Amplitude आता है ना? Uttar? Yeah, right. Yeah. Okay. Fine. Okay. Yeah, Shruti, fine. So now you are learning now. जैसे मैंने लास्ट इसमें दिया था आपको कि डीले x of n-1 है तो +1 ऐड करते हैं. So now tell me your understanding for this. Tell me your understanding for this. कि if there is a compression, तो हमें क्या करना चाहिए? What we have to do? And if there is a expansion, then what we have to do? Okay. Any doubt, students, in this? I'll explain to you this part. If you have a doubt, any one of you? Yes, sir. Sir, can you please explain this in detail? Who is this? Mansi, sir. Okay, Mans, I'll do. So, students, please concentrate. What signal you have? This is your x of. Okay. This is given. This is given to you. Yeah. So this is given to you. This is x of t is given to you. X of t. We want to find out x of 2t. Okay, x of 2t. So when you are totally lost, okay,
if you don't know anything कि क्या करना है, so simply prepare a table. Prepare a table. Okay. The table is like this. Table is like this. You have a t ka value. Okay. You have t ka value. Okay. And then you have a value y of t. What is your y of t? Y of t is, I'm talking about this now. I'm talking about this thing. I don't know whether it is a compression or expansion. I don't know right now. I'm talking about this. So y of t. What is a y of t? Y of t is x of 2t. X of 2t. Okay, x of 2t. So now prepare a table. Prepare a table. Take the first sample as 0. First sample as 0. 0. Put t as 0. So what I'll get? Y of 0. I'll get y of 0. What is y of 0? This is equal to x of 0. And what is x of 0 over here? How much is that? 1. How much is x of 1? So that amplitude, I am writing down the amplitude, right? Okay, it is 1. Now I'll take one more value, like it is 1. 1. So 1 put किया यहाँ पे, 1 यहाँ पे put किया, it becomes x of 2. Right? Is this okay? Yes, sir. X of 2. What is the x of 2 का value over here? 0. 0, yeah, right. So the moment you put that, x of 2 is 0. X of 2 is 0. Now I'll take one more point. I'll take one more point. That is 0.5. 0.5. What is t is 0.5. So y of 0.5 is equal to how much? X of 1. x of 1. And how much is the value x of 1 ka? X of 1 ka value is 0 again. 0. Okay, 0. 0. Same thing is because this is symmetric signal. So same thing is for both the negative side and positive side. Okay, positive side, negative, plus or minus. दोनों जगह same आएगा. And we now will plot this now. I'll plot it over here because I have space right. On the right hand side I have space. Sir, can you please explain again? Sir, समझा नहीं. Sir, can you Sir, please it's explain कि 0.5. ये 0 कैसे आ रहा है value? Like y of 0 पे Okay, fine. from where are we finding that? Okay, Nice. we'll come back to this particular slide later. I'll start with the discrete signal. Okay, I'll start the discrete signal for understanding. I thought you will understand. ठीक है, मैं एक पहले शॉर्टकट बोलता हूँ. ठीक है, शॉर्टकट कैसे करना है? Shortcut is like this. This is x of t. Okay, x of t. Whenever you want this thing, 2t. Whenever you want 2t, x of 2t. Okay, x of 2t अगर आपको चाहिए तो I'll erase this first. Whenever you want x of 2t, what is the factor? Multiplication factor 2. Multiplication factor is 2. तो उसका opposite करना है. हमने पहले भी डिले में भी वही किया था. So whatever value you have over here, you divide it by 2. Okay, whatever value you have over here, you divide it by 2. So what value you will get? It is minus 1 by 2 to plus 1 by 2. Plus 1 by 2. कैसे आता है हम लोग देख लेंगे. कैसे आता है वो देख लेंगे. Is there any change on y-axis? Is there any change? No. on y? No. Why? Because the operation is on time. Bracket के अंदर x-axis पे है. Okay. So that's why here you got minus 1 by 2. Here you got plus. तो shortcuts है. Multiplication किया है तो उसका opposite operation perform करना है. That is division. Division by 2. So you got this. You got this. And students, please pay attention. This may be YY question for your practical. And depending upon that, you may get your marks. YY question will be different for all the people. The same question I will not repeat. So please take care. And now next signal, I'll explain this part first, and then I will go to the remaining explanation. So here your t by 2 division है, t के division है, तो आपको 2 से multiply करना है opposite side. तो
This 1 is multiplied by 2, so it becomes 2. This minus 1 is multiplied by 2, this becomes 2. And from minus 2 to 0, from minus 2 to 0, which part is there? You have a ramp signal, a ramp signal. So same ramp will continue, no change. Same ramp will continue. Okay. Similarly, from 0 to 1, it is negative ramp. Negative ramp. So यहाँ पे भी negative ramp same आए. So no change in signal का representation. So this is a rough understanding. So I'll go with a discrete signal now. I'll go with a discrete signal. So what is the discrete signal? I'll check whether I have it or not. Sir, can you please wait for a minute? I'm noting it down. Okay. No, I'll come back to this because I'll come back to this. Wait, don't. Now this is also same thing. Now I'll ये वाला part. चलो ये वाला part explain करता हूँ. Okay. ये ज़्यादा easy पड़ेगा. Because you have all the signals and यहाँ पे space भी है थोड़ा. So I'll explain this part first. What is the given signal? Anyone of you? Given signal? The step Continuous. Continuous signal. Good. Continuous, yeah. Yeah. Continuous signal. It is y of t. Y of t. So this is my given signal. This is my given signal. Using application. Okay. This is my given signal. ये वाला मेरा given signal है. And what I want a new signal w of t, which is 3t. I want this signal. Okay. W of t as 3t. So now I'll shift this. Now I'm concentrating on the first one, W. I'm concentrating on WT. Okay. I want now this solution for WT. This is WT. WT. I'm working on this one. So WT is equal to WT. This is solution for WT. WT is equal to y of 3t. Y of 3t. This is your WT. So now what I'll do if I don't know anything, okay, the idea will be the solution will be easy. Solution will be easy when you follow shortcuts. Okay, but for understanding, I'll tell you. So one, what I require, I need a table. I need a table with t ka value, and I need a table which is new y ka value. And the final amplitude of the signal. So I'll take the value of t as 0. I'll take the value, random value. Okay. I'll take the value 2. So this is y of t, not 0. Random value t as 0. Tell me what is this value? This will be y of 0. Y of 0. Zero. As simple as what is y of 0? The moment I put the moment I put 0 over here, okay. The moment I put 0 here, y of 0, okay. Y of 0 का amplitude कितना है? 2. 2. Okay. It is 2. It is 2, not 0. Okay. So this amplitude is 2. What I'll do now? I'll take one more sample now. Okay. I'll take 1. I'll take 1. Yeah. At 1, what is the value? Y of 1. 3. Y of 3. 3. 3. Y of 3. Yeah, y of 3. How much is the value? So 2. Okay. And then for plotting, I'll do one more correction. I'll do y of 3, which is equal to 2, but it is coming down to 0, no? It is resting on 0. So it is 0. Okay. So it is 0. Sir, I'll but take- how it is 0? Because at that moment,
ओके मुझे ये बताओ कि एक सिंपल एट वन टाइम आप घर पे भी हो और यहाँ पे कॉलेज में हो, पॉसिबल है? नो No. no, it's simple, no. Okay, same thing, at one point two amplitudes are not possible, so the curve will go like that. Okay, these are all ideal conditions, these are all ideal, but practically कैसे जैसे आपने कंट्रोल सिस्टम में देखा है कि वो ग्राफ ऐसा डाई करता है, okay, और बाद में वो जीरो पे आता है, सडन आता है। ग्राफ पे शो करके बता सकते हो? ओके ओके फाइन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ या सर जब हम कोई भी ग्राफ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो हम उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, राइट? हाँ वाज ये देखो ये सर हम ग्राफ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का यूज करके बनाते हैं, राइट? हाँ तो वैसे यहाँ पे भी वैसे ही है, तो उस हिसाब से मतलब वैल्यू जीरो नहीं लग रहा है, तो आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ वही वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके सो यहाँ पे ओके यहाँ पे कितना वैल्यू है? 2 वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू है, बट इट इज कमिंग डाउन टू 0 at 3 you have 2 values, one is 0 and one is 2, But sir, that 0 is on the x-axis, right? yeah. But for future, remember, even if you take this as 2, no worries. Even if you take this as 2, no worries. Okay. But after 3, that is sample value 3.1. How much is the value? 3.1 पे कितना है? 0. 0 है. Yeah. So यहाँ पे आपने 0 लिखा या आपने 2 लिखा, no need to worry. Because the graph is coming down to 0 at that point. You have to follow the shape. Same shape will not change. जो हमने पहले ही y-axis पे shape change नहीं होगा, हमने पहले ही किया था, because the operation is on time. You agree with this? Yes, sir. Okay. एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जिधर नीचे सेकंड ग्राफ में डब्ल्यू टी इक्वल्स टू जो ग्राफ बनाया से उसमें 1 इधर लिखा है, और सर अपने YF3 क्यों लिखा? फिर वो समझ में नहीं आया थोड़ा कम। Okay. टी में 1 लिखा है और Okay. ठीक है। I'll eraser. So prior to this, I'll draw one more part. यहाँ पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एक पार्ट करता हूँ। तो दिस इज T एंड दिस इज WT, चलेगा? यस सर। तो 0, दिस इज W ऑफ 0, T को मैंने 0 पुट किया ना, यहाँ पे T को हमने 0 पुट किया तो W ऑफ 0 आया। तो जब यहाँ पे इक्वल टू y ऑफ 3t है, तो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे T तो y ऑफ 0 आएगा, राइट? यस सर। ओके, एंड y ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे? 2, so that's why the amplitude is 2. Okay, now I'll take T का value as 3, which gives me W of 3. यस सर। Okay, W of 3, हमें 3 पे जंप नहीं करना है डायरेक्ट। What I'll do, I'll take this as 1. Okay, T का 1, T is 1, तो W of कितना आया? W of 3। अरे बेटा W of 1. W of 1 आया। 1 होगा। यस सर। 1 W of 1 which is equal to y of कितना है? 3। 3। y of 3, तो ये y of 3 का वैल्यू कितना है? You write 0 or 2, anything, because that point you have 2 values. 0, anything is okay. But next, the moment I check this as 2, T is equal to 2, कितना आएगा बेटा? सर 0। W of 2 which is equal to y of 5 6 हाँ 6। y of 6 कहाँ पे? देखो यहाँ पे आगे इधर, तो ये यहाँ पे इधर, which is 0. Okay, 0.
Now what I'll do, I'll take one value which is less than that, 0.5. 0.5. तो कितना आएगा W of 0.5. W of 0.5, which is Y of how much? 1.5. 3 by 2 ना 1.5. 1.5. तो Y of 1.5 कितना है यहाँ पे? 0. How much is that? 2. 2. Good. At 2. Okay. Now we'll plot all these things. जो अपने को ये मिला है यहाँ पे ये चीज. I'll change the color. I'll change the color. Now we'll plot this thing. ये जो मिला है अपने को ना ये plot करते हैं हम, ठीक है ये. Because अपना new signal क्या है W है ना? Yes, sir. New signal is W. So I'll plot here only. ये अपना W है. ये W है, which is 0. 0 पे कितना था अपना? W 0 पे कितना है? 2 2. Okay. Then 1.5 पे कितना है? 2 ना? 0 Good. 1.5 0 है. But 0.5 पे कितना है? 1 0.5 पे 1 कहाँ है बेटा? 2 गलती 2 है. Okay. And then 1 पे कितना है? 0. देखो यहाँ पे 1 पे कितना वैल्यू है? 0 and 2 2 और 0 दोनों भी कौन सा भी चलेगा. Whereas 0.5 पे कितना है? It is 2. 2. Okay. 2. 0.5 पे 2 है तो और ये वहां से यहाँ गया. Then shape will not change. तो shape वापस वहां पे नीचे आना चाहिए. Because यहाँ पे दो वैल्यूज है ना, तो आप भी यहाँ पे 2 वैल्यूज ड्रॉ करो. एक 2 है और यहाँ पे 0 है. Okay. 0 है. Whereas this thing W of 2 कितना है? 0. Okay. W of 2 is 0. तो 2 is 0. तो मेरा इस सिग्नल ये आ गया सेम आ गया. 1 पे 2 है, 1 पे 2 है, 0 पे 2 है, then 2 पे 0 है. So like this is your signal, right? Yes, sir. Okay. So now I'll go with the next part. This is clear now, everyone. I'll go with the next part. I want this now. I want this. हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. रेड से जो हमने ड्रॉ किया था वो था अपना. I forgot to tell you one more thing. कि यहाँ पे how much is the width for this signal? Width of this signal, width 3 कैसे कैलकुलेट किया बेटा? So 0 से X 3. axis पे we have formula upper limit minus lower limit. So 3 minus 0 which is equal to 3. Width is 3. What about width of this? 1. 1 minus 1. 1. Okay, width of this is 1 minus 0 which is equal to 1. 1. Width is 3 over here, whereas width is 1. So which operation is this? Compression. Compression. Yes. So this is so that's why we call this as compression. जो भी जहाँ पे भी t का factor greater than 1 है, we call that compression. We call that as compression. Agree, all of you? Yes, Is this sir. clear? Yeah. This thing is clear. So this width वाला part is clear now. Now I'll draw for this. Now please help me. चलो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे. आप बोलो. Okay. So what I have to draw? क्या करना पड़ेगा? Table. So Table. T and So I'll draw a table with vertical line first. Proper draw करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 5 and 6. What I have to write over here? यहाँ पे क्या आएगा? First इसमें I have to write T T. Next VT. T of T. V of T. Good. Happy By that T. you are answering. Then Y of T by 3. phi of T by 3. And then Then amplitude. So amplitude. good. Yeah. So which value I have to start? 0. 0. V of 0. This is my new signal. Okay. V of 0. Then V of 0 is equal to Y of
zero. Y of 0. y of 0 Y of 0. y of 0 पे कितना एम्पलीट्यूड है 2. 2 2. 2. चल रहा है 2 then 1 v of 1. 1 which is equal to y of 1 by 1 3. by 3. पे किधर पर है यहाँ पे कितना एम्पलीट्यूड है 2. 2. 2 right Two. good then 2 v of 2. v of 1 V of 2. v of 2 okay which is y of 2 by 3. 2 by 3. 2 by 3 अभी यहाँ पे कहाँ पे था 2 by 3 3 से 2. कम है ना अपने Yes, 2 by sir. 3 तो वो भी 2 है वो भी 2 है so directly I'll jump to 3 which is v of V of V of 3. 3 which is y of 1. 1. 1 1. y of 1 which is equal to 2. 2. 2. 2 ये ऐसा कंटिन्यू जाएगा कहाँ तक जाता है कुछ बोल सकते 9. 9 तक Sir, सर 9 9 तक होगा ना. ओके तो 9 so continue ऐसे continue v of 9 v of 9 which is equal to y of Y of 3. 3. y of 3 and यहाँ पे क्या आएगा 0. 0 or 0 और 2 0 2. or 2. यहाँ this point your signal is dying your signal is going to 0 okay 0 so I'll draw this ये draw तो अभी करने का जरूरत है या अंडरस्टैंडिंग आ गया नहीं सर Yes, sir. समझा It's है ना. understood. तो 0 पे 2 आ गया ओके इवन 1 पे ओके और एक इम्पोर्टेंट पार्ट आई जस्ट वांट टू टेल अभी ये सब टेबल हो गया ना तो अभी कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बाकी सब छोड़ दो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट बाकी सब मैं ओके फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल रीड दिस तो सब कुछ काम बचा ही नहीं है ये सब चीजों का ठीक है ओनली इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस टू ओके तो अभी 0 पे दिस 0 पे y of 0 दिस इज माय न्यू एक्सिस y of 0 पे कितना वैल्यू है 2 तो दैट्स व्हाई यहाँ पे y of 0 पे 2 आया y of 1 इट इज 2 सो y of 1 पे भी y of 1 पे भी 2 आया सिमिलरली sorry not y v of 1 and finally v of 9 is either 2 or 0 जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया 2 or 0 2 and 0 and this is your answer all of you got it those who understood please raise your hand fast raise your hand fast everyone I just want to check the attentiveness of students 57 60 63 68 तो जिसको समझा प्लीज रेज योर हैंड जिसको समझा प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट डे 50% समझा फिर भी यू कैन रेज योर हैंड बिकॉज उसको प्रैक्टिस लगता है हर कोई एक दिन भी नहीं सीखता कोई स्लो लर्नर होता है कोई फास्ट लर्नर होता है तो लर्निंग इज डिफरेंट या फाइन ओके लोअर योर हैंड सो स्टूडेंट्स this is the simple thing okay now I just want to tell you the important part of this also which is width tell me width what about width how much is the width So 9. 9. width is 9 for this okay width for this okay I'll write w for this is 9 minus 0 which is equal to 9 whereas the width of this is 3 width of this is 3 so width is increasing so which operation is this Expansion. expansion तो expansion कब होता है whenever the time domain is divided by some amount तो ये expansion हो जाता है whereas multiply किया तो compression Compression. so opposite both are opposite so this is our learning for this hour okay so it's almost 10:35
सीआर थोड़ा ब्रेक कम ले सकते क्या हम? सीआर कोऑर्डिनेटर या 10 मिनट्स का चाहिए? वैष्णवी फास्ट बोलो बेटा, वैष्णवी हिमांशु। सर मतलब सर आपकी मर्जी। हाँ योर विश सर। अरे मैं तो 4 घंटा कंटिन्यू, कभी कभी ऐसा लेक्चर में ऐसा होता है ना कि 4 घंटा कंटिन्यू में शुरू करना है, कुछ प्रॉब्लम आता है बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड ऑनलाइन मोड है, थोड़ा बहुत बोर वगैरह होता है। या फाइन, थोड़ा एक काम करते हैं, इट्स 10:35, विल मीट एट 10:42 फास्ट, 7 मिनट्स, 10:42, okay, 10:42 fast, a break of 7 minutes. यस सर, थैंक यू। Those who don't want break, okay, there is hand raise, Shruti and Ananya. So no, I had a doubt. Acha Okay. Shruti. Sir, in exam there is need to draw that table, or we can directly Yeah, go yeah. for graph. No, you have to draw that table. Even in tutorials also, you have to draw that table. Okay, sir. Okay, but the question is for 10 marks and there are n number of operations. There are 10 operations supposed. तो वहाँ पे draw करने की जरूरत है. Okay. Okay, sir. Those who don't want break, they can solve this sum. I'll come back with the answer. Okay. Yeah. Sir, that arrow indicates that the sample is at 0, right? Recording stopped.
It's 10:42. I'll wait for 1 more minute. So, Yeah. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये डिस्क्रीट है राइट, सो हम हर वैल्यू पे तो इसका हम लोग को वो एम्पलीट्यूड तो नहीं पता चलेगा। नहीं, हर वाले पे नहीं चाहिए ना, सो डिस्क्रीट में और इजी हो जाते हो। अच्छा, सो ओके, तो हर वैल्यू ओके, ठीक है, ओके सो और सर ये 2 के नीचे जो एरो है वो क्योंकि नीचे arrow है। ओके रोहित, यू आर देयर फॉर लास्ट लेक्चर। सर ये 0 पोजीशन पे सैंपल है ना ये? Yeah. yes sir, I was there. So arrow indicates sample at 0. Arrow indicates sample at 0. Rohit. Okay, I must have missed that part, sir. Okay. Okay, all of you, welcome back. It's 10:44 now. Now for this sum, okay, we'll find out the answer. I want x of 2n and x of n by 2. X of 2n and x of n by 2. So for that, Recording in progress. For that, I have to draw a graph first of all. Okay. Whenever a signal is given to you, first draw a graph. Graphical representation is very important. With that, you will get a clear understanding. So for this graph, what I have is x-axis. I have y-axis. I have y-axis. And then now I have samples, different samples. I've used green color for samples. At 0, how much is the amplitude? सर 2 Okay, meanwhile, किसी ने solve किया है? कोई है ऐसा? Yes, sir. I tried to Yes, sir. solve. Who tried? Just show me your answer. Shruti did it, Ananya did it. This is the way to find out best student from the class. Can you please share your screen? Share your notebook. Switch on your camera. Good, Shruti. I'm proud of you. Okay, Tushar there. Good, Tushar. Yeah, fine. Okay. Ananya, I can understand you don't have a camera, right? Yeah, sir. Yeah. So conditions are different. No worry. No need to worry about that. But जहाँ पे कैमरा चाहिए वहाँ पे जहाँ पे कैमरा चाहिए वहाँ पे कैमरा यूज करो. I got Kushal's message when is done. There is only one value. Yeah, right. So clear message right now. I'm sorry. Okay, so now I'll put the arrows. So at 0, how much is the amplitude? Sir 2. Yeah, 2. So I'll draw an arrow at 0. Imagine यहाँ पे मैं हर एक वैल्यू 0 वगैरह ड्रॉ करने को टाइम जाएगा इसलिए 0. So now at 1, how much is the value? 0. 0. 0. यहाँ पे 0 है. Okay, यहाँ पे 0 है. Then at 2, how much is the value? 3. 3. Okay, and 2 is 3. More than that. At -1, how much is the value? 0. 0. And at -2, So it's 1. 1. So this is my graph. So for your understanding, I'll draw the axis value. How much is this? This is -2. Okay. -2.
How much is this? This is minus 1. Then this is 0. Then the next one is 1. And the next one is 2. Right? And the amplitude over here is 1. I'll draw the amplitude by blue line, 1. Whereas the amplitude here is 2 and amplitude here is 3. Okay. So this is my signal. Now for this signal, I have to find out x of 2n. Okay. So यहाँ पे भी आपका table आएगा. I'll teach you only one. You tell me the second one. Okay. And randomly, I'll be asking the other student to share their notebook. So table. What we need is this: 1, 2, 3, 4, 6. Now, what I want over here is the value. पहला कॉलम क्या होगा? T. क्या? Sorry, N. Oh, good. N. Next. X raised to x of n. X of X 2n. 2n. X. No, the new signal. New signal is y of n. Okay. जहाँ पे दिया नहीं है वहाँ पे हमें assume करना है. So it is y of n. Okay, sir. Y of n. Next, यहाँ पे x of 2n. X of 2n. X of 2n, yes. 2n. And finally, amplitude. Amplitude. So similarly, एक लाइन में यहाँ पे भी ड्रॉप करता हूँ, so that this will look like. हाँ, तो फर्स्ट यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है. -2. 0 से स्टार्ट करेंगे. So minus 2. -2. ओके ठीक है चलिए. -2 से कर. As wish. 0 से भी चलेगा. 0 से भी चलेगा, बाद में नीचे -2 कर सकते हैं. Yes, sir. -2 पे y of n क्या आएगा? y of n क्या आएगा? Y of -2. y of -2. हाँ, y of -2. And Yes, sir. Now amplitude is X of -4. x of -1. क्यों? Sir, -4 होगा ना, multiply by 2. -4. X of -4. -4 आएगा ना बेटा. हाँ. -4. तो जो आपने स्टार्ट किया वो रॉन्ग कैसे हो जाता है? वो देखो, जो आपने स्टार्ट किया वो रॉन्ग. -4 पे कुछ है ही नहीं, तो हम फोकट का अपना टाइम वेस्ट कर. दैट्स व्हाई जनरली वो लॉजिक लगाना है. x of 2n है और अपने पास मैक्सिमम सैंपल कितना है? मैक्सिमम सैंपल इज हाउ मच? -1. एंड में दोनों एंड में एक -2 है, एक 2 है. Yes, sir. तो 2n है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करना है 2 को. सो मैक्सिमम सैंपल वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा ना. Yes, sir. सो यू हैव टू स्टार्ट विद -1 और चलेगा अपने -2 से स्टार्ट करते भी चलेगा. हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड ओवर हियर? 1. तो -4 पे 1 कहाँ पे? कौन है? 0. Oh, sorry, Zero sir, है, sir. sir. Zero. हाँ 0. यहाँ पे -1. -1 पे हाउ मच? Y Y of -1 या y of -1 and y of -2. X of -2. x of -2. X of -2. X of हम थोड़ा गड़बड़ में थोड़ा wrong कर लेते हैं. x of -2. How much is x of -2? 1. Now it is 1. now. Yeah. Good. Similarly, 0. Y of Y of 0 Y and of x and of X 0. of 0. Y of 0. X of 0. If I'm wrong, please correct me. Then x of 0.
जीरो सबसे सिंपल है। सर उससे Sir, पहले -1/2 भी आएगा। लेना चाहिए था ना क्या सर। क्या -1/2 लेते तो सर 1 का वैल्यू आ जाता ना, -1 का 0। हाँ, वहां पे आ Yes, जाता है, बट वहां पे अपने को क्या है, वहां पे कितना है अपना वैल्यू? 0 है सर, 0.5. जीरो है -1। सर। तो जीरो इसलिए हमने वो स्किप किया, चलेगा। स्किप ही होने वाला है ना, बिकॉज अपने डिफॉल्ट साइज क्या होता है? डिफॉल्ट साइज क्या होता है? डिफॉल्ट साइज, स्टेप साइज 1 1 का होता है ना डिफॉल्ट, तो बीच में के जो आता है वो स्किप करना है, यस सर। ठीक है, तो इसलिए वो लिया। हाँ ओके, यहाँ पे कितना अपडेटेड? 2 आएगा 2। नाउ माइनस -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट? so 1 y ऑफ कितना आएगा? 1 and x One. of 2. Which is equal to x of 2. X of 2. 2, which is equal to how much? 3. 3. 3 एंड अगर मैं यहाँ पे +2 लेता तो क्या होता है? Sir, तो 0 हो जाएगा. Y of 2. y of X of 2, 4. right. And 0. y of 2, then this is x of 4. X of 4. 4। ये बहुत सिंपल है, बट मैं इसको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोमेंट जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ गया ना, तो हम फास्ट शुरू करेंगे। ओके, हाउ मच इज दिस वैल्यू? 0। और हमें अभी इसमें से क्या कंसिडर करना है? इसमें से क्या क्या करना पड़ेगा कंसिडर? -1 to 1. -1 से 1. this is what this, I'll repeat, बाकी सब छोड़ देना, ये दोनों से, ये दोनों, एक y of n, new signal y of n, its amplitude I want, okay, I don't want this now, ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। Now draw it. After drawing क्या आएगा आपका? Should I draw it? या ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है? No, sir. ओके ठीक है, सब तो समझने होगा। I'll draw it. So again, new signal is this. New signal कहाँ पे start होगा? -2 by it is 0, so no need to draw it. Okay, no need to draw it. Then at -1 it is 1. Please help me. -1 how much? So 1. 1. Then 0 how much? 2. 2. And then +1 it is how much? 3. 3. So I'll draw it. -1, -1, 0. And then this is 1, its amplitude is 1, 2, and 3. This is not a complete representation, okay? Here you have to write down which signal is this. This signal is y of n, okay? This signal is y of n, whereas this signal is x-axis is n. Now this is a complete representation. This is your final signal. And how you explain that this is compression? Width range. Width, okay. कम हो गया. Yeah, so width is less, so that's why it is a compression. Similarly, you can perform for expansion also. Okay, so this is your homework for expansion. मानसी बोलो बेटा। सर अभी हम लोग को तो इसका शॉर्टकट पता है, मतलब अगर कॉम्प्रेशन करना है तो वी विल डिवाइड इट बाय जो भी है ए का वैल्यू, और अगर मतलब एक्सपेंशन करना है तो वील हैव टू मल्टीप्लाई इट। तो टेबल का तो कोई जरूरत नहीं है ना, अगर वी नो दिस थिंग देन। सो टेबल का जरूरत नहीं है, बिकॉज अपने जो नेक्स्ट ऑपरेशन आएंगे व्हेन यू परफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑन अ सिग्नल वगैरह, at that time no need to draw a table. That time you require the understanding, only understanding. So this is a tedious job. ये जो है टेबल वाला पार्ट is a tedious job. Simply हमें क्या करना है, जो शॉर्टकट है, जो अपर लिमिट है,
ये जो अपर लिमिट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, इसको डिवाइड बाय 2 करना है, इसको डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड बाय 2, इसको, so whatever you get is this signal. This is shortcut. I'll give you shortcut for each and every lecture. But Mansi, important part is that कि अगर ये सम या ऐसा सम आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा या 2 मार्क्स के लिए पूछा, that time you have to draw this step. Okay, sir. Okay, that time you have to draw this step. So दोनों आना चाहिए, right? So this is about the compression and expansion. This is about compression and expansion. Now the next operation is folding. So who will tell me folding का क्या होना चाहिए? The time scaling a continuous signal के लिए है. This is it. So this is, I'll share you PPTs today in your classroom. So the students please go through that PPT and learn this slide also. Next, representative of signal using standard signals. ये हम थोड़ा बाद में स्टडी करेंगे. बस फोल्डिंग करेंगे. What about folding? Okay, folding शायद मेरा skip हो गया है यहाँ पे. Okay, I'll explain you folding over here. This is x of t. Okay, this is x of t. What is folding now? Folding is तो जब हमारा टाइम डोमेन नेगेटिव होता है, negative, opposite हो जाता है. Okay, हाँ, so opposite. x of minus t. X of minus t is folding. X of minus t. तो simple है. Y axis से उसको 180 degree shift करना है. 180 degree shift. So what will be the new signal? Table यहाँ पे भी, here also you can draw the tables. Okay, table. कैसे? New signal y of t is equal to x of t, x of minus t. So t is 0. Then what you get? New signal as same signal. T is 3. Then you will get minus 3 over there. Okay. So in this way you can easily represent that signal. But यहाँ पे for understanding, I'll tell you, folding is with respect to y-axis. Okay. All of you understood? The new signal क्या होगा अपना? Who will help me for this? Folding. Sir, that will be on left hand side, na? Yeah, good. Left hand side. That will be on left hand side. So my new signal will be like this. It will start from what value? -3. It will start from -3, right? And it will end at what value? 0. What is the amplitude over here? 1. 1. यहाँ पे it is 1, right? What about sample value over here? -3. -3. Yeah, and then what about notation of this signal? X of -t. Good, great. So -t. What is remaining? X level. T and but minus Yeah. So it is -t. Good. Yeah. So this is -t. So this is your folding operation. That बोलो बेटा बोलो. that x of minus t will be, the sign will be minus there Which on sign? y-axis. On y-axis, that x of minus t. Yeah, this is minus. ये माइनस ही किया ना यहाँ पे मैंने माइनस ही किया ना. That is understandable. Yeah, so here it was plus, तो ये माइनस हो गया. So सर वो t माइनस हो गया वो समझा, बट देन x of minus t क्यों किया? Yeah, that's कहाँ पे? इधर. yes. हाँ, Because y axis पे. और सिग्नल का न्यू नेम इज x of minus t ना. मैं वापस अगर वापस मैं x of t लिखता हूँ तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस x of t एंड दिस थिंग? इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना. ये देखो क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है फोल्डिंग से. x of t becomes x of minus t. Now this sample will remain as it is, whereas this sample will take a fold of 180. This sample will take a fold of 180 as with respect to y-axis. Always the folding is with respect to y-axis.
So means it's just the representation. मतलब. Yeah, it's representation only. Okay, sir. Okay. Yeah, fine. So this is folding. Now, parallelly, I'll teach you one more thing. Representation of this signal using standard signal. What is standard signal? ये सिग्नल को देखकर आपको क्या लगता है कौन सा स्टैंडर्ड सिग्नल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें कौन सा सिग्नल है? रैम्प दिख रहा है आपको? Step. हाँ. It is step signal. So we can represent this signal using a step signal. Okay, you can represent this signal using a step signal. So I'll draw it over here. I'll draw it over here. X of t. My signal is x of t. X of t. If I write x of t is equal to u of t, is this right? Yes. Step signal का represent. Okay, then चलो check करते हैं. चलो, you are saying s, so I'll check. This is. You are saying what you are saying? Okay, I'll check. I'll write it. You said x of t is equal to u of t, no? So u of t. Now, what is u of t? How you define u of t? What is u of t? Unit step signal, agree? Yes, sir. Unit step signal. So it start with zero, and it will end at infinity पे कितना वैल्यू होगा? 1 ही होगा ना. 1 ही होगा. Good. 1 ही होगा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ जो आपने बोला अभी. बोला ना x of t is equal to u of t बोला. लिख सकते हैं ऐसे? Because दोनों में डिफरेंस है ना? नहीं वो 0 नहीं हो रहा ना सेकंड. Yeah, fine, good. So to represent this signal into using standard signal, I have to use one more signal. I have to do some addition, subtraction, multiplication हो रही है. Okay, जो हमने किया इसमें किया मैथमेटिक्स में. So यहाँ पे आपको और एक सिग्नल कंसीडर करना पड़ेगा, and then you have to subtract that signal from that given signal. So u of t, what is u? Okay, I'll draw one more signal. यहाँ पे now please name this signal. Which signal is this? This is delay ना sir. Good. This is delay. Now representation of this signal क्या होना चाहिए? U of t minus t minus 1. 3. U t minus 3. T minus Good, 3. good. So this is u t minus 3. Good. Great. 3. This is u t minus 3. Yeah. So what should I do to get x of t? I have to use these two signals. Sorry. Is this Deepak? Yes, sir. Yeah, Deepak. Okay. Represent 14. So you have to subtract. You have to subtract the signal. Okay. तो अभी जैसे हमने 1 minus 1 is equal to मैंने अगर क्वेश्चन पूछा तो all will raise their hand. 1 minus 1 is 0, sir. Okay. So similarly, u of t minus u of t minus 3. So u of t minus u of t minus 3. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? चलो चेक करते हैं. X of t. X of t आ जाएगा. Okay, fine. तो चेक करते हैं. From now I'll use some different annotation. Okay. From I'll use color also different. So the black color is better. From 0 till 3. How much is this value? 1. 1. From 0 to 3, how much is the value of second signal? 0. 0. So 1 minus 0
तो आपको क्या आएगा? 1 minus 0 is 1. 1. तो One. if I do such thing, यहाँ पे मैं अगर ये करता हूँ u of t minus u of t minus u of t minus 3 अगर कहता हूँ मैं u of t minus 3 तो क्या होगा? u of t minus u of t minus 3 तो मेरा सिग्नल 0 to 3 में कितना होगा? It is One. पहले 1, right? It is 1. So 0 to 3 it is 1. It is 1. 0 to 3 it is 1. At 3, this 1 minus 1 Zero. at 0. So it will come down to 0. After 3, suppose 4 पे कितना होगा? 4 पे it is, this is 1 and this is also 1. 0. 0. So 4 पे 0 आएगा. Okay. So my new signal, ये सिग्नल को हमें स्टैंडर्ड सिग्नल में कैसे लिख सकते हैं? Like this, x of t is represented like this. It is not u of t. It is u of t minus 3. Right? Students, all of you got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Because the signal is dying after 3. The signal is dying after 3. So 3 को मुझे कट करना है. So I have to subtract one more signal from that, which is of same nature. वो जो आपने डायलॉग सुना होगा, लोहे को काटता है, like that. Unit step को काटता है. So I cannot subtract a ramp signal from that. So I have to subtract only step signal from that. So u of t minus u of t minus 3, तो क्या हो जाएगा? A pulse. Now the new signal is pulse, and this is your standard representation for pulse. अभी आपको अगर मैथ्स 3 का टॉपर कौन है अपने क्लास में? सर ऑनलाइन मोड में सभी ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे कुछ. मैथ्स 3 का टॉपर, मैथ्स 3, एनीवन ऑफ यू? ठीक है. मैथ्स 3 में ऐसा पल्स दिया है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म या लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोल रहा है, तो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. बट व्हेन यू हैव दिस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन तो बहुत इजी जाता है. इट विल बी इजी. क्वेश्चन ने आंसर दिया था या क्वेश्चन और किसने आंसर दिया था? क्वेश्चन मुझे देखने तो. क्वेश्चन आपका कैमरा ऑन हो रहा है बेटा, एक बार देखें तो आपको आप आंसर देते हो बराबर. राइट, स्विच ऑन हो रहा है कैमरा. एक क्वेश्चन. Okay, good, better, good try. I'm getting your messages. I'm really happy. Good. So this is about representative of signal in terms of other signal. This is one more thing we learned today. हमने आज क्या पढ़ा? अभी अपने पास टाइम है वैसा, but हमने क्या पढ़ा? One thing we did is a scaling वाला part, then folding वाला part, then representation of a signal into other signal. And I'll teach you one more part, amplitude scaling. सबसे easy part है amplitude scaling. Okay, amplitude scaling is like easiest part. यहाँ पे. Now you draw this thing. चलो, try this and show me your notebook. The one who will get this answer first will get 100 marks for your first experiment. First. Draw x of t. जिसने पहले शो किया उसको 100 मार्क्स और फर्स्ट प्रैक्टिस. डू इट फास्ट. You have to show me your notebook. वीडियो पे दिखाना है. I'm waiting. If you are trying, please raise your hand. Take participant time. If you are trying, if you are active in class, if you are trying, please raise your hand.
Good. I'm proud of you all. Students. You all are good. (49) 50 students are trying. Good. 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 Keep that hand raise as it is, and उसके बाद मुझे वीडियो ऑन करके ना नोटबुक जो दिखाएगा he or she will get Done, sir. Shruti done. Show me. Okay, I'll take the 3 students. Take it. 3 students. Sir, done. Shruti कहाँ पे बेटा? Okay, good. Shruti का done. Next कौन है? Next switch on your video. Next Shruti, switch off your video. Who is next? Who can switch on their video? Shruti will get 100 marks for first. Sir, I have done, but I think it is wrong. Done, sir. Who is that? Show me. That doesn't matter. Wrong से हम लोग judge नहीं कर रहे. The one who tried is it. Who is this? Sohani? Yeah, fine, Sohani. Okay, good, Sohani. ठीक है. I'll explain you this part. Who else? और किसी का कैमरा दिखा नहीं मुझे. Third one कौन है? Fast दिखाओ. Sir. नहीं, वीडियो नहीं दिख रहा है. कहाँ? ऑन ही है. On है. Okay, lower your hand, all of you. Lower your hand. अभी मुझे श्रेयांश का दिख रहा है वीडियो. Then श्रेयांश शर्मा B27. थोड़ा क्लोज करना. Okay, fine, Shreyansh. Yeah, Shreyansh will get 100 marks. Shreyansh 27. Fine. Who else? Third कौन है? Sohani will get 95. Yeah, sir. वो third कौन है? Third. Lower your hand, students. Sir, Himanshu. हिमांशु का कैमरा Sir, Mansi. दिख रहा है. मानसी तो है. ऑन है सर. बोलो बेटा हिमांशु मानसी का. सर ऑन किया है. संकेत का भी ऑन है क्या? सर दिख रहा है. हाँ ठीक. फाइन. एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मुझे रिमाइंड कर देना. Recording is there. We have recording also. Okay, students. So I'll draw it for all. Students, please help me for this. So first, u of t plus 1. U of t plus 1. U of t plus 1 means कहाँ से start होगा? So -1. -1 से start होगा. -1 से start होगा और ये continue कहाँ पे जाएगा? Infinity. Infinity. Positive infinity. Okay. U of t minus 2. So 2 से start होगा. 2 start होगा. 2 से start होगा. And this will continue till Infinity. infinity. I'm drawing a rough sketch only. So please understand. Now this is not t is equal to 0. I'll correct it. T is equal to 0 again. This is t is equal to -1. This is -1. Okay. Whereas this is how much? So t is equal to 2. 2. So now what I'm doing over here is यहाँ पे मैं u of t plus 1 को 1 से u of t minus 2 subtract कर. So this minus this. So this signal minus the next signal. So about this from -1 till -1 till 2, -1 till 2, this signal is 1. ये 1 है यहाँ till 2. Okay, 2 तक it is 1. 2 वाला है 2 पे it is 1. Whereas the other signal from -1 ये 0 है. Okay, -1 से यहाँ तक 0 is 0. I'll use some different color. The second signal is 0. Second signal is 0. यहाँ से यहाँ तक 0. ये 0 है यहाँ पे. Okay.
So 1 minus 0, it is 1. So the signal will continue. So minus 1 पे minus 1, then 0, then 1, and then last 2. First two. So minus 1 पे it is 1. Okay, minus 1 पे 1. What about next? क्या होगा? Sir, इसके till बाद 2. Sir, 1. it will be 1 till what value? Sir, 2. Two. Till 2. 2 तक रहेगा. 2 तक रहेगा. And at 2, 0 हो जाएगा. 0. so it will be a pulse, and my new signal is x of t. Is this right? Yes, sir. Yes, sir. How much is the amplitude for this now? So 1. So Sir, 1. Why? one. Why? Yes. Because 2 minus 1. Sir, there is no change in क्योंकि y axis. amplitude change नहीं होता है. amplitude change. Okay. So this is your understanding. Okay. So this is your final signal. Yeah, got it. Again, I got a message from Aditya, B Division 12. Yeah, good Aditya. Yeah, you're right. You're right. Done with this. So I'll clear everything. I'll move forward. Amplitude operation, ये तो सबसे simple है, amplitude operation. Okay. So amplitude operation क्या होगा? It is like change on y-axis. So suppose यहाँ पे क्या दे? Given x2 of t, given x2 of t, find 1 minus x2 of t. So this is your x2 of t. This is your x2 of t. This signal is your x2 of t. And what they want? 1 minus x2 of t. What is 1? 1 is a signal which has a value 1 throughout the time term. ये वाला one. Okay, this is 1. So 1 minus this thing. 1 minus x2 of. So tell me your answer. क्या answer है आपका? First, tell me your answer. It's very difficult because one is ramp and one is step. हाँ बोलिए. This will be the signal. Okay, now you have to work on this. Please take a screenshot of this. Now you'll have to work on this. Okay. Now give me answer for second. Second thoda easy. This is the answer, students. This is the answer for this. The answer इसका है ये. Give me answer for second. x2 of t into u of t. So, 0 to 1, it will be like step and then ramp. Okay. चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. अभी किसने आंसर किया? अभी जस्ट उपकार. Yes, sir. आपने किया आंसर अभी? Yes, sir. Yeah. So now I'll ask some questions. Okay. चलो फर्स्ट आंसर जो बाकी के लोग आंसर दे नहीं पा रहे वो भी दे सकते. 1 into 1. 1. 1. 1 into 0. 0. 0. 0. 1 into 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. Okay. But can you imagine कि जब भी हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो सेम चीज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Same आएगा मतलब. तो same thing, if you multiply unit step signal with any signal, तो same signal का curve follow होगा. But जहाँ पे 0 है, 0 into 100 is how much?
0. 0. So on left hand side, our unit step signal is a right sided sequence. Unit step signal is a right sided sequence, whereas the x of 2 is both sided sequence. x of 2 is both sided sequence. तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम x2 को u of t से, तो अपना सीक्वेंस होगा जो न्यू सीक्वेंस और राइट साइड सीक्वेंस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट स्टेप सिग्नल 0 है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0. So minus infinity till 0, the signal will be 0 first of all. Yes, sir. And step into ramp, तो क्या फॉलो होना चाहिए? Ramp, because 0.5 into 1 is 0.5, 0 into 1 is 0, so ramp follow होना चाहिए. So this is my answer. Okay, this is my answer. So addition जब करेंगे तब वो shift हो जाएगा. Okay? Suppose if I add x2 of t with u of t, तो वो shift हो जाए, ऊपर shift हो जाए. But multiplication क्या होगा? Multiplication will be like this. This is your final sum. You all agree with this now? Yes, sir. Is this answer correct? Yeah. Okay. So this is my multiplication of two signals. Now you please work on this. If you have doubt regarding this answer, I have doubt regarding the first one. Yeah. I'm telling you. If you have doubt regarding this answer, please take some time out for next 1 week. So if you have any doubt, we'll discuss this operation in tutorial. Okay, but try is very important. Try. There are 200. In second answer, my answer was totally opposite. No, कैसे आया? That's what confusing me. चलो मैं सेकंड है. ओके, फर्स्ट हम ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे. मानसी और किसको डाउट था अभी? हाँ सर चलेगा. मानसी एंड हु एल्स? कौन था? हाँ सर उपकार. ओके, तो प्लीज मैं अगर भूल जाऊंगा तो मुझे ट्यूटोरियल में याद दिलाना सर, वो एक ऑपरेशन बाकी है ये करना. ओके, ये वाला करना, बट बीच में ट्राई करना. ट्राई तो लर्निंग जो खुद करेंगे आप, वो इम्पोर्टेंट है लर्निंग. तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस पार्ट. सिंपल है, माइनस कर रहे हैं हम लोग तो पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव हो जाएगा एंड नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल. ओके, बट सेकंड में शायद उपकार आपको डाउट है सेकंड में अपोजिट कुछ तो आया. ओके, आई विल सॉल्व द सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट. सेकंड वाला, हाउ मच इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू कितना है? 0 है. ये वैल्यू 0 है ना, ये जो रेड पार्ट है दिस इज 0. वेयरएज यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू. तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज हाउ मच? Anything. Sorry, 0. 0. So that's why you get 0. यहाँ तक 0 आएगा. Yes. Okay. Now this part is clear to everyone. Now what about the zero sample? Zero sample पे ये है 1. Zero sample पे मैंने आपको पहले ही बोला है, मैंने टोटल लॉस्ट सैंपल वाइज कंसीडर कर. जीरो सैंपल पे ये कितना है? 1. ये भी 1 है, तो कितना होना चाहिए? ये 1. तो 1 into 1 1 आ गया यहाँ पे. ओके, ये 1 आ गया. Okay, sir. Got now. You got it. Then also I'll explain you for the remaining. At 1, this one it is 0, whereas at this one it is how much? 1. 1 into 0 is again 0. This you got 0. ठीक है. Then 0.5, बीच में 0.5 ऑपरेशन है. 0.5 ऑपरेशन है. 0.5 पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0.5 होगा. 0.5. Okay, why? Because the ramp is of slope -1. Ramp is of slope -1. तो 0.5, तो यहाँ पे 0.5 into 1, तो यहाँ पे भी 0.5 है. Yes, sir. And so that's why it is following the ramp signal. It is following the ramp signal. Yes, sir. Got it. Okay, this is clear. Yeah, fine. Now next.
please take screenshot of this also. We'll discuss this thing in a tutorial. Okay, take screenshot of this. Now I'm jumping to the next part. Unit step function application. Okay. So R of t plus 2, R of t plus 2 is same as that of t plus 2 because it is a ramp signal. So this is notation of this. I'll write down this part in other way also. Like ये जो है part इधर यहाँ पे. So this is R of t plus 2 भी लिख सकता हूँ. R of t plus 2. Or the second notification is t plus 2 into u of t plus 2. Ramp signal is represented by R of t. Okay. R of t. यहाँ पे it is R of t plus 1. R of t plus 1. This is R of t plus 1. Or you can represent this as t plus 1 into u of t plus 1. Whose amplitude is 6. The first one amplitude is 3. Here it is R of t minus 1. T minus 1. And finally, this is u of t minus 1. Same, जो as it is, जिसको कुछ represent करने का जरूरत नहीं. T minus 1. Okay. So question is that you have to plot this thing. You have to plot this thing. So R of t plus 2. R of t plus 2. So a signal I am just giving you a rough idea of this. So R of t plus 2, this signal will continue till infinity. यहाँ तक infinity तक जाएगा ऐसे. R of t plus 2. Is this right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then you are cutting that signal at minus 1. Okay. You are cutting that signal at minus 1. Whose amplitude is 3. तो कट करना है तो डबल एम्पलीट्यूड से कट करना पड़ेगा. So that's why यहाँ पे it's understanding of this right now it's difficult. Okay. But when you try it, तो हो जाएगा. So this is 6 का एम्पलीट्यूड से माइनस करेंगे 6 का. तो क्या होगा? It will come down. It will come down now. So जहाँ पे तो यहाँ पे ये आपको अभी घर पे होमवर्क करना है. Okay. This will come down like this. So this is minus 6 t plus 1. Minus 6 सर t ये plus 1. नहीं समझा. समझेगा. Okay. तो ये जब माइनस करेंगे आप तो ये वाला जो है एक कट हो जाएगा. ये वाला जो है एक कट हो जाएगा यहाँ से. और फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा. Again in this ये हम ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे. ट्यूटोरियल जो अपना है उसमें पढ़ेंगे. बट मीनवाइल मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ चीजें आपको घर पे भी करना चाहिए. So take a screenshot of this and work on this. अगर डाउट है हम लोग सॉल्व करेंगे. अगर डाउट नहीं है तो we'll move forward like that. अपना टाइम सेव होता है उसमें. Okay? तो ये R of t फर्स्ट स्टार्ट हो गया -2 से. उसमें हमने और एक R of t ऐड किया एट -1. ओके, -1. तो विथ डबल एम्पलीट्यूड तो वो क्या होगा? एक एम्पलीट्यूड तो उसको 0 बना देगा और दूसरा डबल उसका डबल एम्पलीट्यूड. एक -3 उसको 0 बना देगा, दूसरा -3 उसको और नेगेटिव में लिखेगा. सो यू विल गेट द envelope like that. Okay. Then at t minus at 1 एक और एक सिग्नल ऐड हो रहा है यहाँ पे. At 1 it is one more signal is we are adding one more signal यहाँ पे. Okay. So I'll use this. और ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है यहाँ पे. तो ये सिग्नल और एक सिग्नल उसमें ऐड हो रहा है which is positive ramp.
ये है पॉजिटिव रैंप, नेगेटिव नहीं है, ये थ्री एम्पलीट्यूड का पॉजिटिव रैंप है. ओके, 3 एम्पलीट्यूड का पॉजिटिव रैंप है. सो इफ यू ऐड दिस पर्टिकुलर रैंप ऑफ 3 एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा? रैंप माइनस रैंप इज अ स्टेप सिंगल. Ramp minus ramp is a step single. That step single will continue till 3. Okay, the step single will continue till 3. ये सिग्नल आपका 3 तक कंटिन्यू होगा यहाँ पे ऐसा. एंड 3 को one more सिग्नल आप ऐड कर दो. That is this. ये सिग्नल आप ऐड कर दो, तो -3 में +3 ऐड हो गया, तो ये 0 हो जाएगा. Okay. The 0 there, and finally you will get this signal. So I have given you a rough idea of this signal. So take a screenshot of this and try at home. If you have doubt, we'll solve that doubt in next lecture. Okay? Okay, students? Yes, sir. Okay, sir. Okay. What do you have after this? इसके बाद क्या है? ABL. ABL, sir. ABL. Okay. ठीक है. चलो. All the best. You all can leave now. सर हमारा नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन होगा ना? नोटिस जब तक नहीं आती ना, तब तक हम लोग यही टाइम टेबल फॉलो करें. ओके सर. Okay, but remember, exams will be offline. Sir, ISA one that is being held on 14th February. There are 90% chances that may be online. Okay. Sorry, offline, sir. That may be offline. सर हमारे अभी तो ऑफलाइन लेक्चर. Sir, because government has issued that 15 February के पहले जितने भी एग्जाम्स है सब ऑनलाइन होने चाहिए, इसलिए